बर्थडे टू यू। बार बार दिन ये आए, बार बार दिल ये गाए, तू जिए हजारों साल, ये मेरी है आरज़ू। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू स्वीट हार्ट, हैप्पी बर्थडे टू यू। बेकरार होके दामन थाम लूं मैं किसका, बेकरार होके दामन थाम लूं मैं किसका। क्या मिसाल दूं मैं तेरे, नाम लूं मैं किसका। नहीं नहीं ऐसा हंसी कोई नहीं है, जिस पे ये नजर रुक जाए, बेमिसाल जो कहलाए, तुझे हजारों साल, ये मेरी है आरज़ू। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू स्वीट हार्ट, हैप्पी बर्थडे टू यू।
like a reasonably long time. All right. Good evening, everyone. I would like to thank you for coming to celebrate my dad's milestone birthday. That is his 50th birthday. To keep it short, I'm just getting to schedule events. My sister and I will be welcoming my dad with the classic Amitabh Bachchan song. And then we chose this song since we're always waiting for our dad to come back from his daily activities such as tennis and soccer and yoga. And even all the other social gatherings, as we are right now. And my sister and I will give short speeches, and then we will end it with another short song dedicated to my father. And as always, my mom has to take over. Thank you. Yep, and I know my dad's in the parking lot, so I just gotta go a little fast with this. La 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 la. La 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 la. La 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 la. La 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 la. Come on, everybody. इंतहा हो गई इंतजार की आईना कुछ खबर मेरे डैड की ये हमें है यकीन है यही वो कहीं फिर वजह क्या हुई इंतजार की बात जो है अपनी बात वो यहाँ कहीं नहीं किसी में वो है अच्छे सबसे अच्छे गली गली में साथ साथ वो है मेरे गम में मेरी दिल की हर खुशी में जिंदगी में वो नहीं तो कुछ नहीं है मेरी जिंदगी में बुझ जाए शमायत बार की इंतहा हो गई इंतजार की आईना कुछ खबर मेरे डैड की ये हमें है यही वो कहीं फिर वजह क्या हुई इंतजार की
배우니 하얗듯이 차라리 배우니 하얗듯이 Come on everybody! La 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 Mr. Bishop Guha, aka my dad. Before we go on a picture spree, I just wanted to ask my dad, were you surprised? Yes. Thank you all. There is a saying in Bengal, this world is a rangamanch. Rangamanch is we come here to act, right? So it's a good acting, very good acting. And thank you all. Thank you very much for coming. I'm so touched. बाबा की जय
quietness so you can see their love for the dad. Good evening, everyone. I'm extremely delighted to see a room full of people. I would like to thank everyone for gracing us with your presence on this special day. 50 golden years of a man with a heart of gold. My father, my After just 12 years of living, such an important day would come so soon. My mom tells me that my dad was very scared of the gender reveal of my birth. He desperately wanted a little princess, and I'm glad God heard his prayers. The birth dates for my father and I are only 3 days apart. My parents tried their best to get us to share the same birth date, but I came in earlier than expected. I am told I started walking at 9 months and talking at 12. Baba had to get used to the way I spoke, as it was just gibberish. For the word thank you, I used to say kaka. Nothing similar to the actual word, but I had a mind of my own. And it was always Radha dosa, which apparently is sadha or plain dosa. One night, I made him drive the whole town just to buy me Baniva ice cream. It took him too long of a while to understand what it meant, but I just wanted vanilla ice cream. The fact, though, is he has kept the child alive in him and me. These childhood words that I made up
are what he wants me to use in my daily life. Whenever I thank him for something, he says, "Say kaka." And when I dosa, he says, "Rada dosa?" When I was just 3, my mother went to India for a trip. Everyone who knew was amazed how well he took care of my brother and I. Right from dressing a 3-year-old fancily, that's right, I needed my sunglasses, matching shoes, a purse, and whatnot, to feeding, bathing, and finally putting me to sleep. They say girls have their fathers wrapped around their little finger, which couldn't be more true for me. My morning starts with my dad opening his eyes with a smile when I sneak into his room to get his phone to practice my music. He then promptly wakes up to get my breakfast ready. Being fussy about my early morning milk and egg, he then tries different ways to ensure my protein intake is adequate. Some days, chocolate milk and omelet, some days, a Princess TV show while he feeds me, and some days, a bagel with egg. Gosh, I just realized how much I bother him. But he doesn't seem to mind it. Hence, the daily saga continues. He's the one who got me how to learn to ride my bike in just 2 days. Well, you can say I'm a quick learner too, right, Baba? My swimming, my soccer, and a little tennis are all to his credit. And off late, I've joined his bandwagon of the yoga class. Thank you to Sanjana Auntie and my uncle as well. According to Baba, academics can wait, as life lessons are important. How to always be happy, how to be thick-skinned and let nothing affect you are the things Baba talks to me about. For school grades, they go first to Baba so that he can sugarcoat the message to convey to my mom. If not, God save us. So, my dad is the God-sent savior. There's always a next time for him. However bad things are, he's always calm and says, "Next time, do better. Easy peasy." He is the only fan that I have for my singing. Even a small attempt is blown out of proportion and shared with the whole world. He himself watches a performance over and over again, as if he's listening to Lataji or Ashaji. Well, that is unconditional love for his little princess. To the world, he's a happy-go-lucky person, but he's a softie, very emotional. Just calling him Baba, not Dad or Daddy, brought a huge amount of tears to his eyes. Little things are big for him, and big things are immaterial. That is my Baba. I can go on and on, but I know we have a good lineup of events here. And I just want to say, Baba, I will soon start making your morning tea and serve you, and also pick up after you. I will also rush and get breakfast whenever you feel like eating something different. I hope and pray to God that you will always stay healthy and happy and keep spreading happiness and love in the world like you do now. Your shoes are too big to fill, Baba, but I promise I will try. Love you and happy birthday. Well, I'm pretty sure he got emotional from that speech. Well, now my speech is more of, a funny type. So if this hall bursts into an uproarious laughter and the entire town of Plainsboro wakes up, you can blame it on me. First of all, I want to sincerely thank all of you for taking time out of your busy schedules to attend my dad's Golden Jubilee. Well, Dad, what do I say? You are officially old. You have finally reached this grand milestone. I couldn't be more proud to call you my father. Since day one, you've always gone above and beyond to raise me into a human being, and sometimes you have failed when it comes to academics, but overall you were great. I wonder how you would handle a kid like me. It must have been a lot of work, right, Dad? Anyways, Dad, you were an epitome of professionalism, a person who always prides himself on his work, and someone who possesses an unwavering resolve, even if the chances of success are bleak. You've established yourself as a stringent disciplinarian, but you are an extremely fun-loving person at the same time, always spending with both Serbi and I, and you never waste the opportunity to leave the house suddenly for tennis and irritate Mom just for fun. And some of your best dialogues include, I'm quoting you by the way, Nikama.
weekend. When my mom goes ballistic, he chants, "Oh, what day is it? Weekend chalu ho gaya." And then sometimes my mom praises other people, and then he goes into a rant himself and says, "Sharma, Pupesh, Ravi," like a robot. He keeps on saying their names because my mom keeps on praising them. And there are a lot of other dialogues. I couldn't name all of it because of the time limit. With these dialogues, we can make a perfect biopic on you. Honestly, it would be a bestseller. It would be a super hit biopic. It would probably win a Grammy, actually. Out of all the nicknames I've given you, the absolute best is Ustad Badi Guha Ali Khan. You and my mom, A.K. Pandita Krupi Momonkar, never fail to critique Surbis and my music, especially when it comes to music. You're kind of like your own gurus, honestly. Going back to when I was a kid, anyways, while teaching me how to bike, the whole neighborhood still remembers your perseverance. I'm pretty sure Saritanti said you, but they remember my dad's endeavors just to teach me how to bike. And the whole neighborhood still remembers your perseverance and patience just to teach me how to pedal. You never once wavered from that task, no matter how arduous it would be, no matter how hard it would be. Your mentality to this was pedal to the metal. Well, 10 years later, I really didn't have the same problem with teaching me driving, although I did jump some stop signs on the way. But your trend of teaching me was pretty much the same. Although these are very trivial and very small things to a lot of other people, even some of you in this room, it means the world to me, actually. You finally hit 50 years old, and I hope that you can just break the barriers of old age and live forever. You're 50 years old now, but to you, age is just a number. The youth in you is burning ever so passionately, and that passion and happy-go-lucky attitude lightens the mood of the people around you. You say that you're like my older brother, but I feel that you are my younger brother by heart and body, and that is a fact. As I still cannot read your unusual style of tennis even after playing with you for 3 years, and I keep on missing shots. Anyways, thank you from Surabhi, Mom, and I from the bottom of our hearts. I hope that we can continue to live happily as a family for eons, but for now, let's celebrate this grand milestone to the fullest today. Thank you. फूलों का तारों का सबका कहना है, एक करोड़ों में अपने बाबा है, सारी उम्र हमें संग रहना है। फूलों का तारों का सबका कहना है, एक करोड़ों में अपने बाबा है, सारी उम्र हमें संग रहना है। फूलों का तारों का सबका कहना है। देखो हम तुम दोनों हैं एक बाबा के फूल। बाबा अपनी दुनिया में सबसे है फूल। देखो हम तुम दोनों एक बाबा के फूल। बाबा अपनी दुनिया में सबसे है कूल।
ना कोई टेंशन है ना कुछ सहना है, एक करोड़ों में अपने बाबा है, सारी उम्र हमें संग रहना है, फूलों का तारों का सबका कहना है, Thank you. And now, after this soulful song, my mom will be presenting her own musical comedy. It is called, it's her own made-up rag, because now she's in the form of Pandita Krupi Momonkar. So now she will be presenting rag Guha. पानी है ना प्लीज आज तो हाँ पानी है ना रवि ये रवि Good job. Thank you, friends. At the onset, I really want to thank you all for coming. I know times are not great, but thank you for taking your precious time. I know parties have opened up. Everybody's triple booked, 4 times booked, but you did make it special for Guha, and I really appreciate it. Before I start the Guha Rag, I want to thank a couple of people, who were my partners in crime. Avanti, she was my partner in crime. 11 Hawthorne Drive was the address where a lot of Amazon gifts were delivered. Amazon, whatever we ordered. The Indian gifts that I ordered, the party favors were delivered to 11 Hawthorne. Last night we sat and made up those, the champagne flutes and the gift bags. So, bottom of my heart, thank you, Avanti. Thank you, Jyoti. Thank you, Krishnaveni. I was a little sick and I got hot rasam rice one day, and on the walk, Avanti told Krishnaveni that, hey, I gave her some rasam rice because she has to pull up this event, and next day I got a big box of sambar and rice from Krishnaveni, and that really put me back into track. So thank you so much, Krishnaveni. Thank you, Jyoti, for being there always when I needed it. All right. So, little monsters, I meant little munchkins. Good job. Very good job. I gave you the opportunity. I could have come at the beginning and stolen the show. I prefer to come a little later. A star is a star. Alright, so Guha Rag, as the kids rightly said it, Kripi Mohankar Gharana, Guru का नाम कान पे हाथ रख के लेते हैं, so खुद का नाम अगर खुद गुरु हो तो भी कान पे हाथ रख के भी लेते हैं. So कृपी मोहन घराना का है और ये गुहा राग है. सब लोग गुहा को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं. कितना बदमाश है, कितना अच्छा है, in fact, right? So I just kind of tried putting a parody together of the recent times. It starts with the rag of, there are a lot of ras in the rag, I'm not going to go into the details. लेकिन हर राग की एक चलन होता है, एक वाद्य संवादी होता है, एक पैटर्न होता है, people who are singing, and people is here. Please मुझे माफ कर देना, मैडम. बहुत सारा, whatever it is, please माफ करना जो भी भूल चुक हो गया. People who are learning music here, right? So इस घराने की जो खासियत है, इसमें हम लोग we don't give importance to the पकड़ of the rag और the sur और ताल. इसमें शब्दों की पकड़ की बहुत ज़्यादा महत्व है. तो आप सब लोग जरा शब्दों की पकड़ पे ध्यान दीजिए. So ये रस शुरू, हर राग के रस भी होते हैं. तो ये करुणा रस से शुरू होता है जब ये टेनिस जाने की बात करते हैं या जो भी इनकी एक्टिविटीज है. So it just starts like सब लोग मिन्नतें कर रहे हैं, हम तीनों, so we're all waiting and saying don't go today, आज मत चले जाओ, like, and he just doesn't listen. So I'm just going to hum 2 lines. तुम ही खड़े हो, दे दो अभी तुम्हें पानी दे दो. वहाँ क्यों खड़े हो फिर तुम?
So I've been screaming, yelling a lot, so forgive my voice. हर great singer जो होता है हमेशा कहता है गला खराब है आज, so मेरा भी गला खराब है, माफ कर देना. So it starts with two lines I'm just going to sing in between my little speeches for him. आज जाने की जिद ना करो, आज जाने की जिद ना करो, आज जाने की जिद ना करो. थोड़े बर्तन धो भी दो, घर साफ भी कर तो दो, आज जाने की जिद ना करो. हाय मर जाएंगे 100 क्रिकेट टेनिस की बातें किया ना करो, आज जाने की जिद ना करो. तुम ही सोचो जरा क्यों न रोके तुम्हें, तुम ही सोचो जरा क्यों न रोके तुम्हें. जान जाती है जब लॉन्ड्री करना पड़े, जान जाती है जब वैक्यूम करना पड़े. बच्चों की कसम जाने जा, भूखों को खाना दे दो, आज जाने की जिद ना करो, आज जाने की जिद ना करो. तो ये करुणा से स्टार्ट होता है. या आई नो शाकिर, बैठ जाओ. सो ऋषि आपके एक्सपर्ट कमेंट्स बाद में देंगे. तो ये करुणा रस से स्टार्ट होता है एंड देन फिर फ्राइडे आता है. टेनिस खेल कर आ गए भाई साहब, फ्रेश होकर आ गए, टीवी लगा रहे, टेक्स्ट आ जाता है एंड देन टेक्स्ट के बाद मैं बस अभी आ रहा हूँ. तो मैंने कहा अभी खेल कर आ गए, फ्रेश हो गए, खाना है, पिक्चर देखने वाले फ्राइडे नाइट, बस वॉकिंग करके आ रहा हूँ, बस 2 मिनट में. तो मैं चलो मैं भी चलती हूँ. नहीं तुम बैठो मैं जाकर आता हूँ. तो वॉकिंग, अच्छा ठीक है, ओम को लेकर, नहीं तुम बैठो मैं आता हूँ. मैं कुछ तो गड़बड़ है. तो ये चले, उनके पीछे पीछे मैं ड्राइवे पे, देखा ये गए डॉगवुड की तरफ. हॉथॉर्न से कोई आया, हॉथॉर्न से आकर ऑर्किड से जाकर डॉगवुड में मिल गया. तो देखा कोई ऊंचे साहब हैं, व्हाइट टी शर्ट पहना हुआ है, और मैंने कॉल किया अपने साहब को. मुड़ के देखा, बोला हे भगवान, ये तो ड्राइवे पे खड़ी है. अबाउट टर्न वापस. बंदा दूसरा ऑर्किड टू हॉथॉर्न, घर के अंदर. ये आ गए. मैंने कहा क्या हो गया, वॉकिंग हो गया? हाँ बस हो गया. मैंने कहा क्यों, अभी तो गए थे, कोई नहीं था. तूने मूड बिगाड़ दिया, बस आ गया वापस. ठीक है. तो इनका फ्राइडे, तो 2 लाइन अर्ज करती हूँ कि फ्राइडे के लिए. सॉरी, आई मीन इट्स अ क्लासिक सॉन्ग ऑफ आशा जी. दीपक प्लीज माफ करना. खाली हाथ शाम आई है, खाली हाथ शाम आई है, खाली हाथ जाएगी, खाली हाथ शाम आई है. आज भी न पिया मैं तो, आज भी न पिया मैं तो, भरी बोत जाएगी,
खाली हाथ शाम आई है। तो ये तो फिर तो बस इनका मूड ऑफ हो गया था, खेलना हो गया था, लेकिन शाम कंप्लीट नहीं हुई। एंड थैंक्स टू आवर फ्रेंड, तो आई हैव अ कनेक्शन विद द वाइफ, दैट्स हाउ वी कैन कनेक्ट। तेरा पति कहाँ है, मेरा पति कहाँ है, दोनों कहीं तो गए हैं, चलो करते हैं, राइट। लेकिन ये तो बात आने से रहे, फिर होते रहता है नायर साहब, यहाँ कुछ ना कुछ तो चलते ही रहता है। और फिर कहा आपने प्रदीप्ता जी, द इनोसेंट पर्सन, उसको बदनाम कर दिया। तो मैं अब जिसकी बात कर रही हूँ बोलते समय, so just like how we have the see London, and whatever, see London, go Tokyo kind of, ये say Pradipta go honap, so that's the story that is, say Pradipta go honap, Pradipta तो so whatever it is, so then मैंने बोला उनको चल रही है, तुमको 17 साल का हो गया, डैडी को ढूंढ के लाना है, गाड़ी निकाल, तो प्रदीप्ता के कल्डे से आके देखा पूरा लाइट ऑफ है, तो प्रदीप्ता के घर तो है नहीं, चल डॉक्टर की तरफ जाते हैं। तो गराज में बैठे हुए 3-4 महारथी वहां पे, चलो पार्क करो गाड़ी, लो डैडी को अंदर और घर चलो। तो ये अरे हैप्पी होली, अरे अरे होनप करके ऑल द काइंड ऑफ स्टफ, आ गए वापस। तो उसके लिए 2 लाइन, जाइए आप कहाँ जाएंगे, ये डायन खींच के घर लाएगी, ये डायन खींच के घर लाएगी, दूर तक आपके पीछे पीछे, दूर तक आपके पीछे पीछे, मेरी गाड़ी चली आएगी, जाइए आप कहाँ जाएंगे। हमेशा खुद को डायन नहीं बोलूंगी, 2 बार बोलने बहुत हो गया। ओके, तो ये तो इनका चलता रहता। फिर हो गया किस्सा, कहा है आपने भोजानी साहब, रात को 9:30 बजे लेनेपे ट्रेल पे चल रहे हैं, 2 लोग चल सकते हैं आदमी, वहां पे बड़ा ग्रुप चल रहा है लेनेपे ट्रेल। ये भाई साहब तब तक सोचे कि फोन नहीं लेकर जाना है, फोन ले लिया तो पीछे पड़ती है, तो फोन लो ही मत। तो इनका बोला, अरे कृपा, हाँ अनिल, इतने मासूम, बाप रे। तो हाँ अनिल बोलो, हम लोग ना लेनेपे ट्रेल पे चल रहे हैं। ऐसे हाँ तो नहीं, वो भी हमारे साथ है। मैंने कहा रात के 9:30 बजे तुम लोग लेनेपे ट्रेल पे चल रहे हो? हाँ बस चल रहे हैं। तो कहा लेकिन बर्तनों को भी आवाज आ रही है, तुम लोग कैंपिंग कर रहे हो? तो नहीं बस चल रहे हैं, पहुंच जाएंगे घर से। ऐसे नहीं, मुझे ना गुहा को आके पिकअप करना है, तो कहाँ से पिकअप करूं? तो बोला अच्छा ऐसे करना, 10 मिनट में आ जाना, शशि की दुकान के पास आ जाना। तो मैंने कहा इनका 10 मिनट पता नहीं, मैं तो बोली ठीक है 10 मिनट। इमीडिएटली गाड़ी निकाली, 9-10 मिनट लैंडेड शशि दुकान। मैंने कहा शशि का लाइट वगैरह चले हुए, मैंने कहा अंदर जाऊं नहीं जाऊं, मैंने कहा रुक जाती हूँ। फिर फोन किया भोजानी साहब को, फिर से अनिल शशि की दुकान के सामने खड़ी, कहा अच्छा तुम आ गए? अच्छा नहीं बस हम लोग निकलने वाले हैं, बस आ ही रहे हैं। देखा शशि की दुकान का लाइट बंद फटाक से। मैंने कहा हे भगवान, आप तो अंदर भी नहीं जा सकते, इन्होंने लाइट बंद कर दिया। फिर फोन लगाया भोजानी को, बोला यार तुम तो कहते ये लाइट है। अच्छा तुम है तो नहीं, हम लोग निकल गए। तो ऐसा करो शशि की दुकान के पीछे आ जाओ। तो पीछे ये एक औरत को जो घुमा रहे हैं 9:30 बजे रात के। मैंने कहा ठीक है चलो पीछे गई। तो मैंने कहा पीछे तो कोई नहीं है, ये सब व्हाटएवर दैट बैक साइड यू हैव दोस डंप ट्रक्स एंड थिंग्स लाइक दैट। फिर फोन लगाया, यार अनिल है पीछे खड़ी हो। अच्छा तुम पीछे खड़ी हो, हम तो निकल गए तो निकल गए। तो हाँ हम लोग ना चल रहे हैं। तो ये लोग चलने, मैंने कहा जिस रास्ते से अपन गाड़ी लेकर जाते ना वहीं आ जाओ। तो बस भोजानी के पीछे और देखा बाकी जब थे कोई और भी था, एक कोटी बालाजी था, कोटी नहीं आप मुझे मालूम है शरीफ बालाजी सिद्ध मोहंती दोनों गायब हैं, और कोई तो था, तो वो निकल गई है, फंस गया भोजानी। तो इसके साथ चले, हाथ में बच्चों की जैसे आइसक्रीम, जैसे कि बीवी कोई किंडरगार्टन की लड़की जो कुछ सूंघ नहीं पाएगी और कुछ समझ नहीं आए, दोनों आइसक्रीम। तो इसको बोला बैठ गाड़ी में, तो ये डर गए भोजानी। उसे बोलो वो भी बैठ सकता चाहे, नहीं भैया मैं ठीक हूँ, वो बाकी जा रहे हैं मैं निकल जाता हूँ। इसको बोला बैठो चलो घर। तो ये आ गए। तो इसके लिए 2 लाइनर्स बैकग्राउंड देना जरूरी है, क्योंकि उन्हें गाना कहाँ से आ गया। तो इनका गाना
ये जाम भरे भरे डंडे ये बड़े बड़े जरा पी के देखो कल फिर रहो ना रहो ये जाम भरे भरे बाला ओके फिर बाद में अत्री दी यू नो आई नो शी कुडंट कम टू बी नाइस उनके यहाँ पे उनके ग्रैंडसन आए थे तो सब मिले थे यू नो वी डिडंट मीट फॉर अ लॉन्ग टाइम तो वहाँ पे चाय एंड तंदूर एंड ड्रिंक्स भी थे ये खड़े थे सब लोग में खड़े थे हाँ होनब भाई साहब वो आ गए होनब भाई साहब आ गए और मुझे देखा कृपा तेरे को एक बात बोलता हूँ हाँ बोलिए अभी ये 5:30 के पहले वाली थी या बाद वाली थी पता नहीं मेरे को लेकिन बात जरूर बोली उन्होंने मैंने कहा हाँ बोलिए तो मुझसे कहते तू ना गोवा को कुछ बोल मत मैंने कहा ठीक है तो नहीं फिर क्या था ना वो रेबल बन जाता है तो तुम ना कुछ बोलो मत उसको जो करना है करने दो पीना पीना तो कर रहा है अच्छा ठीक है और ये खा रहा है ये मेरी बैटिंग कर रहा है कि ये मेरी यू नो बैंड बजा रहा है पता नहीं हो तो और वो होनब उसके तरफ नहीं नहीं बोल रहा हूँ तुम उसको बोलो ऐसे ठीक है जैसे आप कहो फिर होनब जाके बोल रही यार गुहा मैं तेरी बैटिंग कर रहा था और तू यू नो यू नॉट इवन रिएक्टिंग और सपोर्टिंग वो कृपा क्या समझेगी यू नो तो खैर दैट वाज द 5:30 बिफोर आफ्टर बट ही काइंड ऑफ गेव मी अ ज्ञान से छोड़ दे उसे कुछ देर तक समझ नहीं आया देन आई थॉट एंड देयर वाज अ यूरेका मूवमेंट व्हाट वाज द यूरेका मूवमेंट हम लाइक हे भगवान मेरे को तो अभी तक समझ ही नहीं आया क्या हो रहा था एनी गेसेस क्या हो रहा था No, right? It was a midlife crisis. The rebel was a midlife crisis. And I'm like, oh, now I get it. Why was he doing things in spite of telling him not to do? So now, the song for the midlife crisis. Dedicated to Honab Saab also. Jiggy dost. मैं का करूँ राम गुहा बुढ़ा हो गया हाय मैं का करूँ राम गुहा बुढ़ा हो गया हाय बुढ़ा हो गया हो बुढ़ा हो गया हाय मैं का करूँ राम गुहा बुढ़ा हो गया सब जो गए बार मेरा बुढ़ा भी चला गया सब जो आए वापस गुहा जाने कहाँ खो गया मैं हो गई बदनाम गुहा बुढ़ा हो गया हाय मैं का करूँ राम गुहा बुढ़ा हो गया बुढ़ा हो गया हाय बुढ़ा हो गया अब जाके गुत्ती सुन ली यू नो इट टुक मी सो मच टाइम लेकिन अभी 50 हो गया है शायद यू नो द मिड लाइफ इज एंडेड अभी 60 नहीं जाएंगे तब तक तो शायद ठीक ही रहेंगे तब पता नहीं फिर आगे क्या होगा राइट But all jokes apart, you know, I'm going to be ending up with a couple of more lines of good songs. That, you know, he has been Shravan Kumar, you know, and all of us know the story of Shravan Kumar, not only to his parents, but to my parents. And that means a world to me. We did not have enough bank balance and we bought a house which was on the ground floor because my parents would have had convenience with it for my parents with his incentive money without having sufficient money in our bank balance for our own selves. So he's done that to my parents. My mother was a little older, had a little problem with her legs, wanted to visit the Balaji temple close to Pune and we took her, did a wheelchair and then she insisted that she wanted to have the prasad which was at a little height and had steps. He actually carried the wheelchair step by step and took her all the way up so she could have the prasad, got her down back step by step with the wheelchair. He went to get my mom from India here because she insisted on coming here in a half-dead state, but she wanted to come here. I could not go because Surbi was not a year old. He took the decision, got her here, we looked after her for 3 months where he was carrying her to the bathroom. He was a son-in-law, not a son. So I really, really owe it to him.
To his parents, yes, it's his duty, and he went over and beyond his duty for his parents too, where he used to shave his dad's beard, took him all the way to Jackson Heights for one meal because his father complained, this mache roll is not what your mom makes. He took home, put him in the car, told his dad, get in the car, drove all the way to New York, Jackson Heights, so the father could get a taste closer home. So that's him. So I'm going to sum it up with a couple of lines. You know, we all know he's naughty, we all know he's childish, but that childishness is very rare to find. You know, I mean, to have the child alive in you, to talk your heart out, to not have filters all the time, takes a lot of guts. You mature with age, you think and say things, but to keep that child alive in you is extremely difficult, and Guha manages to do it with ease. I know it's irritating at times to everybody, including family members, but that's how he is, and that's how he sleeps well. He snores with the book kept vertical on his stomach, and he's snoring. Right? He's on the couch watching TV and he's snoring because that's the contentment of life that he has, right? And you'll see a few videos of people saying the same thing. So, these are good lines. So I'm sure he'll appreciate it. He's like, "Ye birthday mera mana rahi hai kya no?" Okay. थोड़े बदमाश हो तुम, थोड़े नादान हो तुम, थोड़े बदमाश हो तुम, थोड़े नादान हो तुम, हाँ मगर ये सच है हमारी जान हो तुम, थोड़े बेईमान हो तुम, थोड़े शैतान हो तुम, थोड़े बेईमान हो तुम, थोड़े शैतान हो तुम, हाँ मगर ये सच है हमारी जान हो तुम, थोड़े बदमाश हो तुम, थोड़े नादान हो तुम. And lastly, I just hope, out of all the things that he has, that he spends some time with me. I'm getting older too, and the children will be leaving home soon. So ending it with a Bengali song. আজ মন চেয়েছে আমি হারিয়ে যাব আমি তোমার সাথে, আজ মন চেয়েছে আমি হারিয়ে যাব আমি তোমার সাথে, সেই অঙ্গীকারে পরি রাখিয়ে দিতে কিছু সময় রেখো তোমার হাতে, আজ মন চেয়েছে আমি হারিয়ে যাব আমি তোমার সাথে. Happy 50th birthday, Guha. Wish you all the health and happiness. Wish you one wife in this life and 2 kids and unlimited friends with unlimited love. Happy birthday. ভগবানের কাছে প্রার্থনা করি সুস্থ থাক, ভালো থাক। তোর ছেলেরা একটু বড়ই হয়ে গেছে এখন, তাই না? এখন তো তুই তো মস্ত বড় একজন বাবা হয়ে গেছিস, বিশাল বড় বাবা। बार बार ये दिन आए, बार बार ये दिन गाए, तू जिए हजारों साल, ये मेरी आरज़ू. Happy birthday to you,
Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday মা, খুব ভালো থেকো, সুস্থ থাকো, এটা ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করি। মা কিছু বলবে? Many many happy returns of this day and best wishes for Kripa, Om and Shurabi of the day. और मैं किसी का फॉलो कर दूं, मैं बेस्ट कर रहा हूं, I love you. Many happy returns of the day. ভালো Kripa, hangi di, arami til nenu huduguru. Love you, Surabhi and Om. Krupa, extremely proud of you. Returns of the day. ভালো থাক আর খুব আনন্দে কাটা আজকে সারা দিন। বাই। 50th. Wish you a very happy birthday. May you have a great, happy, healthy and prosperous life ahead. Wish you a very, very happy 50th birthday. Stay blessed. Very happy birthday. Very happy 50th birthday. Hi, Guha. Hi. Happy birthday to you. Wish you a very happy 50th birthday. Wish you the very best. Hi Guha, wish you happy 50th birthday. 50th বার্থডে অনেক অনেক শুভেচ্ছা রইল তোর জন্য। ভালো থাকিস ভাই, সুখে থাকিস, ভালো থাকিস আর শরীরটাকে ভালো রাখিস। ভালো থাকিস, ছেলেকে ভালো থাক, ভালো থাক, সুন্দর থাক, আর ক্রিকেট খেলাটা ছেড়ে টেনিস। আমি কত কঠিন করে ভাবছিলাম তোকে কখন কল করবো ভাবছিস। Happy birthday to you, many many happy returns of the day. God bless you, sir. Hi, brother. Happy birthday to you. Very happy 50th. May all your wishes be fulfilled. May all your dreams come true. And how are you? You remember me? You had met in Bangalore. keep enjoying the time of the day. On occasion of your 50th birthday, I wish you a very prosperous, healthy, peaceful, full of accomplishment years to come. Happy 50th birthday! Happy birthday, Guha. God bless you. I just can't believe that you're turning 50. Happy 50th birthday to you. You know what? Video of Neelam Mishra that you people saw. She was our colleague in Mastec. Just want to give one brief thing because she said all the torture that he gave for, to the city, for the city. So my nickname given by Neelam in Mastec was City. She called me City because this gentleman, she was the daughter of the Inspector General of Police in Mumbai at that time, and she used to live by herself, had a car, so she used to drive to and fro to work, and he naturally, didn't have anything, so he used to tell her he wanted to come to meet me, so he said, Neelam, घर जा रही हो? अच्छा मुझे जाते जाते drop कर देना, Ranging Corner, that's where my sister used to live in, lives in Model Colony still in Pune. Then she used to say, क्यों कहाँ जा रहे? अरे मुझे City जाना है. So then she used to say, तो मैं City छोड़ देती हूँ. So नहीं तुम Ranging Corner में drop कर दो, मैं वहाँ से City चला जाऊँगा. And then this happened many a times because then he would call me before leaving, Neelam is dropping me, you come over, and then we go out, right? And once it so happened that she was dropping him and she saw me coming, she said, oh, तो ये City है, so
And she didn't say anything, but the next day when I went to work, she's like, "Hi, city." And I'm like, "Tumhe kya ho gaya?" She said, "Mujhe sab pata hai, kaun sa city, kya city." So that's the reason she was making that comment of, the city. Thank you so much for living through all these videos. I really wanted to make it special. Thank you, guys. Song no. So we do have a lineup of event, guys. We're going to try and go and come in quickly, right? So we can go with less of events. I know the Walker Garden Stars have things planned. I know Utkarsh has a quiz plan along with somebody else hosting it. I know we have a ladies dance. I really want to thank Preeti, Meenu, where are our other friends who are there? Suparna, Madhuri, and Shushmita. Yeah, sure, absolutely, yes. For putting up a quick dance in 3 hours. In 3 hours, this performance was put in place, and it's amazing. I had to go out of it at the end because I didn't want to spoil the performance, but that's coming up, so really. Okay, so, so I really want to give a little brief because I may not be able to give the brief later. So, do we want to, who's getting, are you? Oh, okay, so can we all step out for about 5 minutes and then quickly come inside following the birthday boy. My mom and my dad as a cameo role. We're presenting a skit that they sued me. So, alright, you guys can take them. We will be your witnesses for today. Wrong, John. We are your source of entertainment for today because obviously no one better was found. Not even Kapil Sharma could come. I know, right? And its prices are so cheap. But anyway, happy 50th birthday to the poor Guhas. That's right, June. It's weird she was sitting there being ugly a second ago. Oh, I saw her dressing up as an old auntie in the bathroom, trying to insult us, huh? Kids these days, I know, right? It's so dumb. Anyways, my fellow audience, you may think that we are just some young people wearing a wig and makeup to look like older people. No. We are just trying to make old people laugh because old people make other old people laugh, right? That's how it works. Jokes, that was correct. We're not 12-year-olds. What made you think that? No. Only this Guha is turning 50. The others are just for show. They're good for nothing. Of course. I'm the best because I function. No, it's just a alien perfume. It's super cheap about it. Anyway, sorry for the confusion. Happy 50th birthday, the third Guha. Now, time for the entertainment stuff that we are being perfect. Just give it a time. So, as I was saying, kids are so dumb. I know, right? And people say it's my fault. I bought the whole history of samosa books. And did they read them? Probably not. I know, right? They keep looking at the pictures for hours and hours. Must be why they're so dumb. Exactly. Oh, apparently we're supposed to introduce ourselves. But here I was thinking we have to be selfless and not do anything but ourselves. I've been telling you, Rekha, selfishness wins. So anyway, I am Rekha, but Me first. Okay, idiot. Anyways, I am Rekha Patel, the creator of Patel Systems Supermarket chain. You are shocked there a lot. And don't worry about the brothers in the title.
so rudely interrupted. I am Rekha Patel, the better and more advanced half of the Patel sisters. I created the most important part. Take notes, Rekha. The premiere. Oh wow! Speaking of premiere, let's get into the advertisements. None of them soft, suave, and just amazing. By now, the Patel sisters. Wrong job. Oh, it's still by the premiere, you know. You get commission. Okay, do you see that birthday boy over there? Apparently he is so Javan that he looked like the younger brother of his own son. Oh, is that so? I just going to be the judge of that. Who's the old man sitting next to him? I'm 17. Okay, shut up now. I have a very funny story about her Guha. Do you want to hear? Okay, Guha, uncle, whatever. So, because we're so much older than you, just respect us, we're your elder. We decided to thrive in sports. Aging has no reference. We have a very lovely tennis court at Walker Garden Farm. Not sponsored. We asked Guha uncle to give us some tennis lessons. We all know how that went. You're too insolent, ungrateful child. Anyways, he was teaching us tennis. I had the Nike racket and Rekha had the Junior Q racket. Everyone knows that Junior Q is much swagger than Nikki, but we all wins. Just so we tried, but we haven't played tennis in a very long time. So even when we missed the ball, Guha uncle kept saying, "Such a beauty! Not even Djokovic could hit like that." What is Djokovic? He won the Wimbledon tournament like 10 times or something. Okay, but a very immaculate English from Guha uncle. Beauty should be added to the dictionary or something. But Daddy and Guha uncle is very good at tennis. Just, I heard that Serena Williams called her today. Happy birthday. She said she wished she never done the Olympics because then she gonna lose. So professional. I know, right? We should try that. Oh, look at the time, 6:97, time for a supreme exit. Just, so bye-bye and happy birthday, Guha uncle. Just, congratulations on my 50. Just, okay, goodbye. More entertainment to follow, so please stay tuned and pay attention. Hello everyone. As you know, my name is Ruby, the daughter of the birthday boy. And my name is Tia, the adopted daughter of the birthday boy, but technically belongs to another family, but we don't get into that. It was you the whole time? Shut up. Okay, I'm just going to ignore that comment. So I hope this wonderful audience enjoyed this very short skit and copy me and my sister friend, Tia, put together. Your friend, that's right. I would never want to be related to this mess. So these were characters we created as alter egos and wanted to be able to incorporate them into Little Birthday, which were amazing Guha uncle. Let's have a big round of applause for it! Well, it's about Guha. Happy birthday, Guha. It's been 5 years for 50, right? Okay. So I was asked to speak for Guha, about Guha rather, and I was wondering why would someone pick me? So nobody accepted it, Guha. Right? Because it's risky business, trust me. It's risky. So anyway, I could explain Guha in 10 seconds. एक गाली में पूरा Guha fit हो जाएगा, but being in the family show, we should learn. So coming back to about Guha, I met Guha कितना time हुआ? I met Guha around like 5-7 years ago. मेरे घर में बच्चे आए थे and Guha came along with his little daughter and kids were playing and Guha said, "Hi, I'm Guha." मैंने कहा Guha? कोई माँ अपने बच्चे का नाम Guha क्यों रखी? मैंने आपका फर्स्ट नेम है? हाँ नहीं ये एक्चुअली लास्ट नेम है। मैंने कहा तो लास्ट नेम क्यों बता रहा है? तो फर्स्ट नेम बताया he has a sweet first name. I don't know how many of you know. Vishwajit, right? Vishwatosh. Vishwatosh. फिर हम लोग आधा घंटा बातें किए कहाँ काम करते हो क्या करते हो Guha भी के अमाउंट Guha बाद में so भूपेश लेते हो क्या? ये क्या बदतमीजी है लेते हो? मैंने कहा
तो ऐसे गुहा मतलब बात क्या कर रहे हो एग्जैक्टली, क्या लेना देना, मतलब नहीं मैं तो सुनता हूँ नहीं यार, मैं तो ओके मेरी बात दैट हैपेंड एंड दैट वाज आवर फर्स्ट डिस्कशन एंड मीटिंग एंड स्टफ लाइक दैट एंड सिंस देन वी मेट लॉट आफ्टर दैट। तो गुहा के बारे में बताया जाता है, गुहा सॉकर खेलता है। एनीवन सो ही प्लेइंग सॉकर? एक ही पार्टनर है उसका सॉकर के साथ, वो जाता है किसके साथ, उसको भी किसी ने तो कृपा, हैव यू थॉट अबाउट दिस वेज कृपा? ये हर संडे सुबह 7 बजे निकलता है, 6 बजे निकलता है और 9 बजे तक वापस आता है। ये लोग करते क्या है? मैं सॉकर नहीं खेलता हूँ, मैं टेनिस खेलता हूँ। आई कैन टेल यू ही प्लेज वेरी गुड टेनिस बाय द वे। गुहा इज मस्ट परहैप्स द बेस्ट टेनिस प्लेयर इन आवर कम्युनिटी। डिफरेंट पार्ट टूर्नामेंट नहीं जीत पाया, ओके। सो बट गुहा के अजीब और एक किस्से। एक बार हम लोग खाना ऑर्डर करने गए थे, सो बिरयानी 4-5 बिरयानी एंड स्टफ लाइक दैट, ऐसा कुछ हुआ। मैंने हुआ 3 वेज बिरयानी है, 4 नॉन वेज है, चिकन बिरयानी और 2 चिकन 65। हाँ मैं वो बताऊँ ना, तो गया 4 चिकन बिरयानी, 3 वेज बिरयानी और 2 चिकन 69। वो बंदा मेरी तरफ देख रहा है, बहुत तेरा दिमाग खराब हो गया। तो मैंने कहा गुहा 65। तब मैं समझ गया 50वां आ रहा है। तो जैसे 60 में लोग सठिया जाते हैं, 50 में गुहा फटिया। तो उसने क्या किया, उसने गाने का भूत सवार हुआ। और मुझे एक बार होता है बंगाली में, कौन सा गाना था, ये ऐसे तो बंगाली में गा के बता रहा था। मैंने भाई ये तो नहीं, मैं गाता हूँ। मैंने कहा हाँ तुम बंगाली हो तो गाओगे, सारे बंगाली गाते हैं तो गुहा भी गाता होगा। मैंने कहा ठीक है। तो एक बार इन लोग का क्या, ऐसे 2-4 बेसुर, सॉरी नॉट बेसुर है, मतलब 2-4 अच्छे लोग नेबरहुड के सारे मिलके कैरोकी ग्रुप करते, मुझे कभी नहीं बुलाया। आई एम नॉट इनटू सिंगिंग एंड ऑल। तो मैं गया था एक बार, तो मैं किसके बगल में बैठा था, दीपक तुम्हारे बगल में बैठा था, तुम्हारा दीपक। तो गुहा शुरू हुआ, कुछ ना कहो कुछ भी। मैं दीपक को बोला, दीपक मेरा जूता कहाँ है? मैंने कहा गुहा यार कम से कम बच्चों से तो कुछ सीख ले। उसके बाद गुहा खेलता है टेनिस, राइट? हम लोग के टेनिस में what was that Vincent you were saying you should call me when you need me of talking about tennis? Where is Vincent? What is that you want to add? The line call. Line call. Yeah. It's always like that. Rupesh line पे था, line पे, especially मेरे से खेलते वक्त on the line. On the line. Yeah. ऐसे बहुत से किस्से हैं जो कि सेंसर किए जाएंगे, we won't be able to say it here. 536. क्या वो 536? अरे गुहा को, अरे एक बार उसने 469 को आना बोला, 69 साले ये 69 भी क्यों स्टक होके बैठा हुआ है? So that is the mystery we got to resolve sometime later. But हो गया, टाइम हो गया नहीं? हो गया ना? So I want to add one more thing to this, right? But apart from all these things, I'll tell you one incident particularly. I want to always, I spoke to many people. I told them कि गुहा के बारे में मैं हमेशा सोचता हूँ कि ये what a ढक्कन है, what है. But I'll tell you one incident. एक बार रात को around 1 बजे ज्योति got a call कि हम लोग के साथ नैनी रहती थी, उनके हस्बैंड की डेथ हो गई, and she was like shockingly talking on the phone. I'm like अंकल चले गए, मैंने कहा कोई नहीं. So लेकिन then I realized he really passed away. So then ज्योति called Krupa also knows auntie, she worked for her. तो फिर मैं क्या नहीं बचा, it's not right. Those people are new in country and all that stuff. Then तो मैं वहाँ गया, पुलिस and auntie was crying, उसके बच्चे and all that stuff. थोड़ी देर बाद गुहा पहुँच गया वहाँ पे. ये कैसे वाला बंदा आ गया? But this Guha, he can reach anywhere. तो गुहा आ गया, गुहा भी देखने लगा, हम लोग बातें करने लगे. गुहा खड़ा, मतलब भूपेश
ये फिंगर का सारा पैसा हम लोग खर्च। I love you, man. That's the quality here, right? Apart from this, whatever already हम लोग करते हैं but at the end of the day, if you are a good human being, that's what matters, right? And that's what you are. Come on, give me a hand. कसम तुम्हें कसम आगे मिलना यूं ही एक जान है भले दो बदन हो जुदा मेरी हो के हमेशा ही रहना अलविदा ये हम नहीं जानते मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना हमें तुमसे प्यार जाने मन तेरे दो नैन चोरी चोरी देखे गए देखो मेरा मन जाने मन मेरे दो नैन जोड़ नहीं सके तुम नहीं खोया होगा कहीं तुम्हारा मन जाने मन क्या हुआ तेरा वादा वो कसम वो इरादा भूलेंगे हम जिस दिन तुम्हें वो दिन जिंदगी का आखिरी दिन होगा क्या हुआ तेरा वादा जीना कैसे जीना हंसी का मैंने जीना मेरे हम ना सीखा कभी जीना कैसे जीना ना सीखा कैसे जीना मेरे हम आजा सनम मधुर चांदनी में हम तुम मिले खुद जाने में भी आ जाए खाती चलते पहले से ही क्या उसे चल पाना जालिमा जो तेरे इश्क में बह गए पहले से ही क्या उसे पहचाना जालिमा बेचारा दिल क्या करे बेचारा दिल क्या करे सावन चले बादल चले सावन चले बादल चले आजे
मोहब्बत निभाती दिल दिया करना। Rock the bird. What an exhilarating performance. Give them a roaring round of applause. No, I can tell you they put a lot of practice into that, because if you could get my dad dancing like that, then of course they practice. Meenu, Madhuri, and Suparna. Thank you so much. Guys, believe me, it was indeed a 3 hours effort. Thank you so much. Means a lot to me. You guys took time from everybody is working from an essential time to come and practice even if it was 3 hours, and you pulled it off. Thank you so much. Love you guys. Each table is a team. Am I correct about that? Alright. So each table is a team. One person from each table can, pull out their phones and, go to kahoot.it on Chrome, Safari, whatever browser you use. Just enter that game pin, and then just please put in your real names. I really don't want to have anyone putting in, really fake names and then us having to kick you off. So आज बहुत लोगों ने गुहा की बजाई है, ठीक है? ये मेरा होता है ना। आज बहुत लोगों ने गुहा की बजाई है, नाम नहीं लेंगे हम, कुछ लोग यहीं बैठे हैं, वो खाना खा रहे हैं।
लेकिन this is the revenge of the brothers. Okay, तो अब हम लोग थोड़ा we got to make a comeback, right? ऐसा मन से तो नहीं छोड़ सकते. So जैसे कि आपको पता है गुहा हीरा है. कुछ लोग तो कहते हैं पुरुष ही नहीं है, महापुरुष है. So lot of people, and it's not easy being Guha. The amount of marital pressure the guy is under. It's not easy being So it's not easy being Guha, right? मतलब इतना बेचारा हंसता रहता है, खुश रहता है, प्रेशर में रहता है घर पे, फिर भी देखो हंसता खुश रहता है. So not a lot of you know this, but a lot of us in the WGM men's group take marital advice from Guha. Okay. So again, Vincent was there, Anil of course was there, and 2-3 other people were there. So लोगों ने बड़ा seriously Guha से बोला, यार गुहा हमको ना घर में बहुत डांट पड़ती है. हमें बोला जाता है तुम ये नहीं करते, तुम वो नहीं करते, तुम टेनिस खेलते, तुम क्रिकेट खेलते हो, फलाना फलाना फलाना. ठीक है, तो क्या बोले घर जाके ऐसा कि हमारा कमबैक हो जाए. तो गुहा लुक्स डेड इन दिया वैसे बिल्कुल एकदम अर्जुन की आंख टाइप स्टेप है. घर जाके बीवी को बोलना मैंने तुम्हें माँ बनाया. The WGF men will be presenting a South Indian style dance. I'm pretty sure it's Loogie dance because that's the most common South Indian style party song. सूट पोणो हत्ते की तो पापलीन दे गोडे जे कसाई फिरे बिलो जीन दे सूट पोणो हत्ते की तो पापलीन दे गोडे जे कसाई फिरे बिलो जीन दे किवे कच्च मोती तेरा सच्चा हो गया नियत जब दा पजामा थोड़े ऊंचा हो गया
1, 2, 1, 2, 3, let's go! And at this time, I need you guys to start singing. Happy birthday to you. Come on. बार बार
बड़ी दीवानी धीरे धीरे बन जाए कोई कहानी देखो देखो है शाम बड़ी दीवानी धीरे धीरे बन जाए ना कोई कहानी दिलदार नजारे हैं आज सभी पर उतरे कितने सितारे हैं अगलो होश नहीं जाना अब मैं मर जाना बस दीवानगी 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 है
Give
लगाए सीटी बजाए दिल धड़ जाए सीटी बजाए बीच सड़क पर रुक जाए वो करके इशारा हो लड़की ओ लड़की आँख मारे ओ लड़की आँख मारे ओ लड़की आँख मारे That's right! देखो तो हसीना को आना भी करीना को तुमको रविवर है चढ़ने लगा थोड़ा हार्ड सा होके थोड़ा जेंटल सा होके थोड़ा सेंटी सा होके थोड़ा मेंटल सा होके सारे 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 Put your hands up! To make some noise! दो तोले की मुंदरी ला दे तीन तोले का कंगना मुंह दिखाई दे दे तू ले जा अपने अंगना दो तोले की मुंदरी ला दे तीन तोले का कंगना मुंह दिखाई दे दे तू ले जा अपने अंगना ना समझ तो चीज पुरानी चेहरा मेरा इस रानी देखेगा तो भाग जाएगा 4, 3, 2, let's go! Let's go!
Let's go!